chapter on introduction because I'm under moral obligation to start the lab course also. Okay. The gentleman who's taking your lab classes is pressing hard. Therefore, right now I'm starting with the new topic, that is velocity analysis. The moment it gains some momentum, I'll switch back to the first topic. Is it okay? Any doubt? Or is it okay? It's okay, sir. Okay. You know that velocity is a scalar quantity or a vector quantity? Vector quantity. It means it's going to have both magnitude as well as direction. Okay. Suppose you are having a link OA. You are having a link OA of length equivalent to small r. Okay. The link is rotating in the anti-clockwise direction about the point O with uniform angular velocity of omega radians per second. Okay. In a very small time delta t, the link OA turns about the center of rotation O through a very small angle delta theta. Therefore, if I'm interested in finding out the velocity of A relative to the point O, what is velocity? Velocity is distance traveled by time taken. And what is the distance traveled? It is equivalent to arc AA dash in a very small time delta t. Velocity of A with a relative to O will be denoted by VAO. Okay, velocity of A relative to O. Arc AA dash can be written as R into delta theta divided by dt. Okay. In the limit or in the limits when delta t tends to 0, in the limits when delta t tends to 0, what will be the velocity of A with respect to O? It will be R into d theta by dt, and you know that d theta by dt is nothing but this is equivalent to omega. Therefore, velocity of A with respect to O is nothing but length of the link multiplied by the angular velocity of that particular link. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, since it's a velocity is a vector quantity, we know that it is going to have both magnitude as well as direction. This particular equation will give you the magnitude. Now, what about direction? The link OA is a rigid link. Means there is very slight deformation without defeating the purpose. Therefore, the point, what is the limitation with the point A? When you are displacing the point A in the anti-clockwise direction, the point A on the link OA, neither the point A can't move in this direction or away from the center of rotation, nor it can come towards the center of rotation because it is on the rigid link. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So the only option left is that it will be in this direction along the arc. Am I right? Now, when delta t
tends to 0, what will happen to delta theta? It will also tend to 0. Or in other words, when delta theta is very small, what will be the direction of velocity vector? It will be almost perpendicular to the link OA at point A. Isn't it? Yes, sir. It will be always, when delta theta is very small, what will happen? Since this can't be the direction of velocity of point A with respect to O, this can't be the direction of velocity of point A with respect to O, therefore the only direction left is perpendicular to the link OA at point A. Okay. Now, normally perpendicular to the link OA at A कहा मैंने, this is O, this is A. It means या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन होगा. But since you are giving the angular velocity in the anti-clockwise direction, therefore the direction of the velocity will be also in this particular direction, not in this particular direction. So from this discussion, there are only 2 points to be concluded that is going to be used throughout the velocity analysis. There is no other concept apart from these 2 concepts. The first one is that the velocity of a point on a rigid link with respect to some other, with respect to the center of rotation will be always equivalent to length of that particular link multiplied by the angular velocity of that particular link. Okay. And the second thing is that the direction of the velocity will be perpendicular to the link. Now, when I say that it is perpendicular to the link, the direction of velocity vector VAO is perpendicular to the link OA at A, it means it is also perpendicular at this point, it is also perpendicular at this point, it is also perpendicular at this point, and it is also perpendicular through the center of rotation. Isn't it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. यही 2 कॉन्सेप्ट हैं जो हम यूज करेंगे. इसके अलावा और कोई तीसरा कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करेंगे. ओके. ओके सर. अब मैं आपको एक लिंक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रिजिड लिंक्स में एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं. This is known as binary link. This is known as ternary link. And this is known as quaternary link. All are rigid bodies. Okay. Why it's known as why this particular link is known as a binary link? Because at its 2 extreme ends, it can form a kinematic pair with the another link. This particular link can form a pair at this end with this particular link, and at the another end, it can form a pair with this particular link. Therefore, at the maximum, this link can form 2 kinematic pairs. Therefore, this is known as a binary link. Any doubt? No, sir. No, In sir. case of ternary link, this is a single piece. ये पूरा link जो है, it's a single piece, but there are 3 vertices or 3. There are 3 vertices at which it can form a turning pair with the adjacent link. Okay, therefore it is known as a ternary link. And in case of quaternary link, there are 4 vertices, one over here, another over here, here and here. ये सारा एक ही piece है. Okay, it can form 4 turning pairs at its 4 end. Therefore, it is known as a quaternary link. Clear? Yes, sir. Okay. Just hold on.
ये देख रहे हो, हर जगह मैं सर्कल बना रहा हूँ. It means here a turning pair can be formed. दो लिंक्स लिया, एक मान लो इस एंड पे एक ये लिंक लिया, दूसरा ये लिंक लिया, दोनों यहाँ जो दोनों के वर्टिसेस हैं एक दूसरे के ऊपर रखा, एक सिलेंडर पिन यहाँ पे एंटर कर दिया. Therefore they will form a turning pair. Now this is the link AB, this is the link BC, this is the link CD. Okay, the angle given is 60 degree. It's said that it is rotating in anti-clockwise direction with omega instantaneous angular velocity of omega radians per second. मैं आपके ज्यादा क्लैरिफाई हो इसलिए मैं लिंक के लेंथ भी लिख दे रहा हूं. AB is equivalent to 50 millimeter. BC is given as say 66 millimeter. CD is given as 56 millimeter and AD is given as 100 millimeter. Angle DAB is given as 60 degree. It's written on the figure. The link AB has an angular velocity of omega of AB is given as 10.5 radians per second in CCW, counterclockwise direction. Okay. What we have to do, we have to find out the velocity of the point C. We have to find out the velocity of the point C. Okay. Now see अगर मैं कई सारे बाइनरी लिंक्स को लूं, जैसे इसमें 4 हैं, let's take 4 binary links and just join them. It will be known as a kinematic chain. ये सब मैं दोबारा रिविजिट करूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जरूरत है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. Okay. In case of a kinematic chain, what you will find that each kinematic link is at least a part of 2 pairs. If I talk about the link number 1, say if this is 1, 2, and this is 3, this is 4. If I talk about the link number 1, it forms a kinematic pair with the link number 2 as well as the link number 4. Each and every link will be a part of at least 2 kinematic pairs. Similarly, if I talk about the link number 2, it is forming a kinematic pair with 1 as well as 3. When I talk about 3, it is forming a kinetic pair with 2 as well as 4. If I talk about the link number 4, it's forming a kinetic pair with link number 3 as well as the link number 1. Now, ये जो assembly है जो आपको closed form में दिख रही है, this is simply known as a kinematic chain. Okay? But the thing is that the kinematic chain is of no use for me. The kinematic chain is of no use for me because with the help of a kinematic chain, till it's a chain, I cannot transmit the motion. In order to transmit the motion, what I have done, I have to fix one link. I have to fix one link. The moment I fixed one link, it becomes a mechanism. Clear? Yes, sir. Okay, a kinematic chain is of no use for you, no use from the point of view of transmitting a motion. See, if I'm giving a rotary motion to this particular link, this will be known as the driver link. This will be known as the driven link. This will be the fixed link, and this will be known as the coupler. ये driver हो जाएगा, ये driven हो जाएगा, and this will be known as the coupler. Now, if I'm going to give a rotary motion to the driver link, depending upon the length of the different links, this particular link, that is the driven link, it should either oscillate or it should rotate. जब rotate करेगा तो I will term it as a crank. अगर ये oscillate करेगा तो मैं इसे simple oscillator कहूँगा, okay? या rocker कहूँगा, or it should rock. मेरा एक मकसद है कि if I'm giving a particular kind of motion to the driver link, the driven link should behave in a particular manner. ये kinematic chain में possible नहीं है until unless I make it mechanism. तो ये जो दिखाया जा रहा है ना, this is grounding. इसको मैं ground कर दिया हूँ या fix कर दिया हूँ. Is it clear? Now, what's my intention over here? My intention over here is to find out the velocity of the point C. अब तक problem statement समझ में आ गई आपको? और Yes, sir. there is any doubt? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now,
जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया है मैं उसी से बात करूंगा. फॉर बी, सी बी इज अ पॉइंट which can be treated as a point on the link AB as well as on the link BC. दोनों पे है ना? Yes, sir. Right Yes, sir. now, the angular velocity of the link AB is given to you. Therefore, for B, A will become the center of rotation. A will become the center of rotation. And from theory, which I have taught you just now, I will find out the velocity of point B with respect to A. What I have said, it's nothing but the product of length of AB multiplied by angular velocity of AB. Length is given to you as 50 millimeter. कितना दिया? 50 दिया है ना? Yes, sir. 50 Yes, दिया sir. हुआ है. Yes, sir. तो 50 divided by 1000 मीटर में आ गया into 10.5. आपको कितना कुछ आपको वेलोसिटी मिल जाएगी? कितना आएगा? Yes, Yes, sir. sir. कितना आएगा बेटा? मेरे को मैग्नीट्यूड बता दो तो ज्यादा आसान हो जाएगा. Sir, 5 into 10 to the minus 7. It will be So 5.05 actually, sir. ये बेसिकली आएगा 0.525 525 meter per second. मीटर पर Yes, sir. सेकंड आ गया. ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड. नाउ for drawing the vector diagram, I am having the complete information about the link AB. Complete information means the magnitude of the velocity of B with respect to A as well as its direction. So for drawing the velocity image, what I'll do, I'll take any point like this, और इसमें जितने भी फिक्स्ड पॉइंट हैं उनको मैं एक ही सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा. सो इन दिस मैकेनिज्म हाउ मेनी फिक्स पॉइंट्स आर देयर? 2, A and D. I will A, D से मैं जितने भी फिक्स्ड पॉइंट होंगे आपके मैकेनिज्म में, दे आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल फिक्स्ड पॉइंट A, D. Okay. Now I know that the velocity of B with respect to A, why? For B, A is the center of rotation, is 0.25 meters per second. I have to draw the vector. I'll choose a scale. Let 1 centimeter represent a velocity of 0.00 meters per second. It means for representing a velocity of 0.525 meters per second, I need to draw a vector of 5.25 centimeters. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब मेरे को वेक्टर का लेंथ भी पता चल गया. अब डायरेक्शन क्या होगा? It will be perpendicular to AB through B. When it is perpendicular to AB through B, it means it is perpendicular to each and every point on the link AB right up to the center of rotation A. Isn't Yes, it? sir. So I will. Yes, sir. अब मैं ड्राफ्टर लूंगा. ड्राफ्टर आपका ये होता है इस तरह से. एक आर्म इसके पैरेलल सेट करूंगा, दूसरा आर्म अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा. I will move to this point perpendicular to the link BA through A. I will draw a vector like this, and this will be the point B, and this vector will give me the velocity of B with respect to A. Clear? Yes, sir. Okay. Now I need to find out इतने में ही ऑपरेट कर रहा हूं, नहीं तो फिगर छुप जाएगी. Velocity of C with respect to B. For that, when I'm finding out the velocity of C with respect to B, it means I'm saying that the point C on the link BC is rotating with B as a center. Okay, with B as a center for this instant. It means in order to find the magnitude, I need the length BC multiplied by omega BC, angular velocity of this link BC.
But the thing is that I know or I have the complete information regarding the length of BC. But do I have any knowledge, prior knowledge of omega BC? No, sir. No, sir. नहीं है ना? No, sir. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम नहीं चला, बट यू नो द डायरेक्शन. What will be the direction? When C is on CB, the direction of velocity will be perpendicular to CB through C. Once it is perpendicular to CB through C, it means it is perpendicular to each and every point on this link through right up to the point B. Am I Yes, right? sir. So मैं अब वेक्टर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन का इस्तेमाल करूंगा. I'll place one arm of my drafter parallel to this, the another will become perpendicular. जो perpendicular है उसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा और इसके perpendicular through point B इस तरह से एक line of infinite length बना दूंगा. क्योंकि infinite length क्यों बना रहा हूँ? Because I don't have the idea of the magnitude. Okay? Clear? Yes, sir. लेकिन अभी मैं सी पॉइंट तो लोकेट नहीं कर पाया. आई हैव टू लोकेट द पॉइंट सी ऑन द वेलोसिटी इमेज. ये वेलोसिटी डायग्राम है, वेलोसिटी इमेज कहलाता है. नाउ अगेन कम टू द पॉइंट सी. द पॉइंट सी इज हैविंग टू डिफरेंट आइडेंटिटीज. इट इज अ पॉइंट ऑन द लिंक BC at the first instant, and you can also say, sir, it's also a point on the link CD. कह सकते हो ना? Yes, sir. So if I'm Yes, sir. interested in finding out the velocity of C with respect to D, from the formula length of the link, it means CD multiplied by angular velocity of this link, that is omega CD. Again, there is the problem. I know this, but I don't know what is omega CD. But I can use the second information, that is the direction. That is the direction. I know that the direction of the velocity of C with respect to D will be perpendicular to CD. Will be perpendicular to CD. When it is perpendicular to C, it will be perpendicular to each and every point on this link right up to the point D. Am I right? Yes, sir. Point D is there. तो मैं क्या करूंगा? एक ड्राफ्टर का एक आर्म इसके पैरेलल सेट करूंगा, दूसरा आर्म इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. आई विल मूव टू द पॉइंट D और इसके परपेंडिकुलर यहां से इस तरह से बना दूंगा. नाउ द इंटरेस्ट, ये देखो, ये भी आपने डायरेक्शंस के बेसिस पे लिया वेक्टर बनाया था, ये भी डायरेक्शन के बेसिस पे बनाया था. द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस वेक्टर्स विल डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट C. So if this is velocity of B with respect to A, this will give you the velocity of C with respect to B, and this will give you the velocity of C with respect to D. Is it clear? Now what you can do, you can measure this vector multiplied by the scale, and you will get the velocity of C with respect to B. अगर इसकी बात करें, you can measure this vector, you can multiply the length of this vector with the scale, you will get the velocity of point D with respect to point, velocity of point C with respect to point D. यहां से यहां तक. Once you are having the velocity of C with respect to B from this vector, you can find out velocity of C with respect to B. ये वेक्टर आपको बता दिया. You know that numerically it is equivalent to BC into omega BC. Therefore, what will be omega BC? Omega BC will be nothing but velocity of C with respect to B, जो ये वेक्टर आपने बताया, divided by the length. बस ये ध्यान रखना होगा कि ये मीटर्स पर सेकंड में है तो ये भी मीटर्स में होना चाहिए. You will get the angular velocity in radians per second. अगर C का ओमेगा CD चाहिए तो you know that velocity of C with respect to D is CD into omega CD. Therefore, omega CD will be velocity of C with respect to D divided by CD. Something radians per second आ जाएगा. Is it clear? Yes, sir.
Yes, sir. बेटा जिनको नहीं समझ में आया ना, इट्स माय सजेशन टू देम कि प्लीज ये सोचते हुए कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा, दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है आपके बारे में सोचने की। क्योंकि अगर यही कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन एनालिसिस करेंगे तो पहले वेलोसिटी चाहिए, क्यों, यू नो दैट एक्सीलरेशन इज dv by dt। तो पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर एक्सीलरेशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक्सीलरेशन तो बनेगा ही नहीं फिर आपसे, क्योंकि वेलोसिटी ही सही नहीं बन पाया। तो सो स्टिल एनी डाउट? No, sir. No, sir. एक्सक्यूज मी सर, सर ये बीसी लाइन सर कैसे बनाई ये बता दो सर, बस और समझ में आ कौन सा गया। बेटा? बीसी लाइन जो बना रखी है सर आपने नीचे वाले डायग्राम में वेक्टर वाले के अंदर, हाँ, वो इस तरह से बनाई, ये वो इस तरह से बनाई मैंने। मुझे यहाँ पे पता था C, when I consider C on the link BC, C is rotating with respect to the center B. B मेरे पास ऑलरेडी लोकेटेड था वेलोसिटी इमेज में। ये फॉर्मूला मैंने लिखा, वेलोसिटी ऑफ C with respect to B is this, but the problem is that I know the length of this particular link, but I don't know its angular velocity, therefore I don't know its magnitude. मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता था, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड नहीं पता, चलो डायरेक्शन पता है। अब डायरेक्शन मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्शन फॉर C when B is the center of rotation, the direction of velocity of C with respect to B will be perpendicular to BC at C। जब एक at C परपेंडिकुलर होगा तो इस लिंक पे जितने भी पॉइंट हैं सब पे परपेंडिकुलर होगा राइट अप टू B। तो मैंने क्या किया, अपना ड्राफ्टर लिया, एक आर्म इसके पैरेलल सेट कर लिया, दूसरा अपने आप परपेंडिकुलर हो गया, पॉइंट B पे मूव किया यहाँ पे, और जो परपेंडिकुलर आर्म था एक वेक्टर बना दिया इनफाइनाइट लेंथ का। क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ क्यों? क्योंकि आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड। उसी तरह जब C को मैं CD पे मार रहा हूँ, देन C इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेंटर CD, उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया। अगेन आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा CD, बट आई नो द डायरेक्शन। The direction will be perpendicular to CD through each and every point on the link CD right up to D। D पॉइंट मेरे पास था, ड्राफ्टर सेट किया है, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, इस चीज को मैं यहाँ पे लेके आया D पे, और यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अब देखो ये जितनी मैं मशक्कत कर रहा हूँ या आप मशक्कत कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लोकेट द पॉइंट C ऑन द वेलोसिटी इमेज। ये भी था C का डायरेक्शन के लिए, ये भी था C के डायरेक्शन के लिए, जहां पे इंटरसेक्ट किए दैट विल बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट C ऑन द वेलोसिटी इमेज। ओके सर, सर आ गया सर समझ में। आगे ये था 4 बार मैकेनिज्म था। अब मैं अगर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे आ जाऊं, this is O, this is A, this is the point B where the connecting rod is connected with the piston. This is the cylinder. आप लिंक आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने लिंक है सिस्टम में, कितने लिंक्स मैंने यूज किए हैं? सर 3 चार 3 लिंक है। 3 किए हैं। एक 4 एक्चुअली 4 लिंक्स यूज किए हैं। देखो ये आपका सिलेंडर है, ये भी फिक्स्ड है, जितने भी फिक्स्ड होंगे चाहे 80 फिक्स्ड क्यों ना हो, वो सबको एक ही माना जाएगा। ये क्रैंकशाफ्ट की बियरिंग है, ये भी फिक्स्ड है। एक लिंक ये हो गया, वही एक लिंक ये भी कहलाएगा। दूसरा लिंक आपका क्रैंक हो गया, तीसरा कनेक्टिंग रॉड हो गया, चौथा आपका पिस्टन हो गया। 4 लिंक्स यूज किए हैं। ओके, सपोज इट इज गिवन दैट इट इज रोटेटिंग at omega radians per second, say it's 10 radians per second. It is making an angle of 40 degree with ये, okay. Length of OA is given as, given कितने सेंटीमीटर है,
AB इज गिवन है, कितने सेंटीमीटर है, ओके, सब कुछ आपको दिया हुआ है. वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी. वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी. अच्छा, एक चीज देखना, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी है ना, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी, सी इज अ मूविंग पॉइंट एंड डी इज अ फिक्स पॉइंट. Though it's written as Yes, velocity sir. with respect to d is nothing but velocity of c, or the absolute velocity. Velocity of any point with respect to another fixed point is known as the absolute velocity, and velocity of a point with respect to some other moving point will be known as relative velocity. Okay, अगर मैं सिर्फ आपसे velocity of c point पूछा हूँ, it means I am talking about the absolute velocity of the point c. अगर मैं आपसे पूछता हूँ what is the relative velocity of c with respect to b, तब आपको vc भी निकालना पड़ता है. Okay, now fixed point O है, ठीक है, ये bearing, ये भी फिक्स्ड है, इसका कोई नाम नहीं दिया इसलिए let it be O. चलो यहां बनाता हूं, उस जगह नहीं बनाता क्योंकि डायरेक्शन का चक्कर आ जाएगा. Now I need to find out the velocity of point B. Okay, पहले A का निकालूंगा. What I will say, A is rotating with respect to O. Velocity of A with respect to O will be length AO multiplied by omega AO. ये भी गिवन है, ये भी गिवन है आपके पास, ठीक है. तो आपके पास एक मैग्नीट्यूड मिल गया से समथिंग मीटर्स पर सेकेंड. डायरेक्शन आपको मालूम है, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेट माय ड्राफ्टर पैरेलल टू दिस, द अनदर आर्म विल बी परपेंडिकुलर. इसके परपेंडिकुलर मैंने यहां से एक वेक्टर बना दिया. दिस विल रिप्रेजेंट द पॉइंट A. Okay, and this will give me the velocity of A with respect to O, or simply the velocity of point A, or the absolute velocity of point A. Okay. Now, B. At the first instant, treat the point B on the link AB. When I treat the point B on the link AB, it means I am interested in finding out velocity of B with respect to A. It will be length AB multiplied by omega AB. The thing is, I don't know about omega AB, but I know this. It means I don't know the magnitude, but I know, being a vector quantity, I know its direction. When B is on AB, the direction of velocity of point B with respect to A will be perpendicular to the link AB through B. When it is perpendicular through B, it will be perpendicular through each and every point of the link AB right up to the point A. So A हमारे पास है, ए ड्राफ्टर का एक आर्म इसके पैरेलल सेट किया, दूसरा परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे ए पॉइंट पे मूव किया, आई ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस परपेंडिकुलर टू दिस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, in the second instant, I'm considering the point B on the slider itself. I'm considering the point B on the slider itself. फिर क्या करूंगा? सर पैरेलल लेके चलेंगे सर इसकी, क्योंकि सर पिस्टन है सर, वो फिक्स पोजीशन में मूव करेगा, ओमेगा नहीं आएगा इस पर. It will move along fixed path, or it will have a straight line motion. ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? It will Yes, have sir. a straight Yes, line sir. motion through the fixed guides. तो मैं ड्राफ्टर यहाँ लाके सेट किया पैरेलल, इसके पैरेलल, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट कौन सा? ये है, यहां से आया और एक वेक्टर इस तरह से मैं बना दिया. दिस विल गिव मी द पोजीशन ऑफ पॉइंट B, and this will give me the velocity of B with respect to A. This will give me the velocity of B with respect to fixed point O. या आप इसको C कहना चाहते हो तो इसको O, C कह दो. It will give you the velocity of B with respect to C, or simply the absolute velocity of B. यही कॉन्सेप्ट है जो चाहे 6 लिंक का हो या 8 लिंक का मैकेनिज्म हो, यही यूज होना है आपका. इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज होना है. So, in the
स्टार्टिंग के सेट की मतलब यहाँ कितने लिंक्स होंगे आपने पूछा था, फिर आपने क्या कहा था कि यहाँ कितने भी हो सकते हैं, लाइक वी कैन नॉट डिटरमिन इट। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कितने भी हो सकते हैं। मैं अभी जो कह रहा हूं कि 4 हैं या 6 हैं या 8 हैं, मैं ये कह रहा हूं इस समय। तो वही कितने मतलब भी कि तो मतलब नहीं बेटा, मैं देखो, इट वेरीज फ्रॉम मैकेनिज्म टू मैकेनिज्म। ओके, कई 6 लिंक के मैकेनिज्म होंगे, कई 8 लिंक के मैकेनिज्म होंगे। द यस थिंग सर। इज दैट वी नीड टू know how to identify the number of links in a system. ओके सर, तो हम इसमें हम डिटरमिन कर सकते हैं कितने लिंक इसमें होगा। इसमें 4 है। ओके सर। आप देख लो, जितने भी फिक्स्ड लिंक हैं, चाहे फिक्स्ड लिंक 10 क्यों ना यूज किए हो, वो काउंट के टाइम में सिर्फ एक ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है। सर एक बार फिर से वो बता सकते हैं ओबी पैरेलल क्यों होगा। वो भी पैरेलल इसलिए होगा क्योंकि इट इज when the point B is on the piston is having a straight line motion through the fixed point. This is the fixed point. It will have only a straight line kind of motion, इसलिए पैरेलल होगा इसके। ओके सर। आंसर दिस ऐसे भी मैकेनिज्म। जिसका भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होता है? एट इन्फिनिटी होता है। Yes, about it. So straight line motion. Got the point? Yes, sir. And so this mechanism is called Slider crank mechanism. slider Crank. crank. And the previous one was? ये देखो, ये स्लाइडर है, ठीक है, ये Yes. क्रैंक है, therefore it will be known as slider crank Okay, sir. mechanism। इसको हम, जो इससे पहले वाला, इसको सिंपली 4 बार कह देते हैं। इससे पहले वाले को बड़ी मुसीबत है, इतना धीरे धीरे स्क्रॉल करता है ना। दिस विल बी नोन एज 4 बार। इसमें 4 बार्स यूज हुए हैं, लिंक हुए हैं 4। ये कस्टम में हो गया कि इसे 4 बार ही कहा जाता है। इट्स 4 बार मैकेनिज्म। Okay, sir. Thank you, sir. कोई और डाउट? क्योंकि नया प्रॉब्लम मैं ले नहीं सकता हूं। अगर डाउट नहीं है, इट्स वेरी गुड। बस जो मैंने 2 सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर क्या इनको सर अपन वो कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते थे सर? अभी सर ज्योमेट्री की वजह से किया है अपने। कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हो। कुछ कुछ ऑथर्स ने कैलकुलेशन के थ्रू भी किए हुए हैं। यस सर। कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर्स इसी पे। ओके सर। ठीक है ना। अब ये जो आपको वेलोसिटी यहां से जो कुछ भी मिला है ना, दैट इज फॉर द इंस्टेंट। द मोमेंट द वैल्यू ऑफ थीटा चेंजेस और द मोमेंट द वैल्यू ऑफ टाइम चेंजेस, एवरीथिंग विल बी ऑल्टर्ड। ये हम जो कुछ भी निकालते हैं एट दिस इंस्टेंट निकालते हैं। ओके। यस सर। स्टिल एनी डाउट और शुड वी कॉल इट अ डे? नो सर। क्या डे ना कॉल करूं? नो सर, नो डाउट। नो डाउट सर। नो डाउट है। अच्छा ठीक है। मैं सोचा आप कहना चाह रहे हो डे ही ना कॉल करूं मैं। तो यहाँ पे ओ पॉइंट फिक्स है ना नीचे वाले में, स्लाइडर क्रैंक में? क्या चीज? स्लाइडर क्रैंक में ओ पॉइंट फिक्स है ना? ओ फिक्स्ड है, हाँ। एंड द बी इज स्लाइडर ओनली। बी इज ऑन द स्लाइडर। यस। ठीक है, बी इज ऑल्सो ऑन द कनेक्टिंग रॉड। द पॉइंट इज हैविंग 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज, जैसे आपके और मेरे साथ है। मैं अपने बाप का भी बेटा हूं, मैं अपनी माँ का भी बेटा हूं। यस। हूं अपने माँ बाप का बेटा। ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं आप किस उस नजरिए से आप उसको देख रहे हो। सर। हाँ जी सर। सर इस वाले में सर जो 4 बार वाला सर जो बनाया सर आपने, सर इसमें सर आपने जो दूसरे निकाली सर वो वी सी विद रिस्पेक्ट टू वी निकाली थी सर, और उल्टा निकालेंगे सर वी बी विद रिस्पेक्ट टू सी, सर तो भी निकल जाएगा ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जब वेक्टोरियल अप्रोच में जाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे उल्टा। बात एक ही आएगा, चाहे मैं ओमेगा बीसी कहूं या ओमेगा सीबी कहूं। यस सर।
ओमेगा की वैल्यू तो वही आएगी ना बेटा। डायरेक्शन में कोई चीज नहीं आएगा ना सर? सर जो ना देखो अप्रोच क्या है, मैं पहले ना वेलोसिटी इमेज पे सारे पॉइंट्स को लोकेट करना चाहता हूँ। ए और डी को लोकेट कर दिया था मैंने यहाँ पे। यस सर। ए और डी फिक्स पॉइंट थे तो मैंने बिना कुछ दिमाग लगाए एक फिक्स पॉइंट को ए और डी से लोकेट कर दिया। अब मैं सिस्टमेटिकली चलना है ना, फिर मैं कह रहा हूँ बी इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, इट मींस फॉर बी ए इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, फिर मैंने बी को लोकेट किया। अच्छा अब ठीक। जब पॉइंट बी लोकेट हो गया तब मैं पॉइंट सी को लोकेट करना चाह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट सी इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने ये वेक्टर बनाया। फिर मैं कह रहा हूँ Yes. पॉइंट सी इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी, तब मैंने ये वेक्टर बनाया। ठीक है यस। सर जो क्रैंक और स्लाइडर वाला मैकेनिज्म आपने बताया सर उसमें सर स्लाइडर का एक पॉइंट तो बी के साथ कनेक्ट है, सर दूसरा पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है? सर आपने कहा था 2 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए मैकेनिज्म के लिए लिंक पे। स्लाइडर का एक पॉइंट कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है, दूसरा फिक्स लिंक से कनेक्टेड है। ओके सर। ठीक है ना। एनीथिंग एल्स? नो सर। एक मिनट, जस्ट बी देयर टू No, sir. लेट मी टेक योर अटेंडेंस। अभी 1 मिनट वहीं रहना। Okay, the attendance part is over. You are free to leave the meet. Hello.